Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business and Environment, and today we are going to start new topic of Unit 1, that is Environmental Analysis Concept. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है और ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका। इन्वायरमेंटल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एज यू नो दैट बिजनेस होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट आते हैं एंड इन सब एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज किया जाए, हाउ वी कैन एनालाइज दिस फैक्टर is basically is done through a process that is known as environmental analysis. तो environmental business environment को कैसे एनालाइज करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं environmental analysis. तो environment को एनालाइज करना, environment कौन सा environment, internal and external environment. Environmental analysis is a strategic process that help to identify all the external and internal element or the factor that may have an effect on the organization performance. All those factors which have a effect on the organization factors, organization in performance. These factors are basically external and internal factors, and whenever we identify these factors which affect the organization performance, this process is known as environmental analysis, or we can also call it as business environmental analysis. तो business environment को analyze करने वाले process को बोलते हैं business environmental analysis. The purpose of environmental analysis का जो purpose क्या होता है, to find out the existing prospective strength and threat and weakness opportunity for business. मेन पर्पस इन्वायरमेंट एनालिसिस क्यों करते हैं, ताकि बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में पता चल सके। इंटरनल इन्वायरमेंट से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता चलेगा एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के बारे में पता चलेगा. सो द मेन पर्पस ऑफ द इन्वायरमेंटल एनालिसिस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑफ अ बिजनेस, to help organization to formulate a strategy to tackle the issue in the future. We can say that organization को future में अपनी strategy को formulation के लिए डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इस तरह के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, ताकि बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज कर सके, ताकि वो जान सके कि फ्यूचर में इसके पास क्या क्या कंडीशन आ सकती है एंड हाउ द बिजनेस कैन अडेप्ट देयर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस. सो इसीलिए इन्वायरमेंटल एनालिसिस जरूरी है. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ मैनेजर. Manager basically usually perform environmental analysis to help and understand the internal and external environment and interplay between them and increase the profitability of appropriateness of the organizational strategy. Organization की strategy appropriate हो, that's why the environmental analysis is required. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजी बहुत एक्यूरेट बनाना चाहता है. इन स्ट्रेटेजीज बेसिकली क्या होती है, स्ट्रेटेजीज बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है. अगर बिजनेस अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है, तो इन ऑर्डर टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग दे हैव टू एनालाइज देयर इन्वायरमेंट, और इस इन्वायरमेंट को एनालाइज करने का प्रोसेस होता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस. सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ environment analysis is a process by which organization monitor their relevant environment to identify the opportunity and threat affecting their business. तो यहाँ पर बेसिकली वही है कि इन्वायरमेंटल एक प्रोसेस है जिसमें कि वो मॉनिटर करता है इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है और इन्वायरमेंट की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज करता है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. वही सब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को आइडेंटिफाई करेगा जो कि बिजनेस को अफेक्ट करेंगे. दे आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस, और यू कैन से द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इन्वायरमेंटल एनालिसिस, दैट इज द फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. इन्वायरमेंटल जो स्कैनिंग है, इट ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैनिंग. इन्वायरमेंटल एनालिसिस को हम क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी कह सकते हैं. इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस प्रोसेस रेदर देन अ इंटरमिटेंट स्कैनिंग प्रोसेस. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट कीप कंटिन्यूइंग. वन टाइम जब स्ट्रेटेजी बन जाती है तो बिजनेस बार बार अपने इन्वायरमेंट एनालिसिस करता रहता है इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन द लॉन्ग रन वे. तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को
सक्सेसफुल करने के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस वे में इन्वायरमेंट एनालिसिस करना पड़ता है. दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. नाउ सेकंड फीचर इज एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस. द इन्वायरमेंट एनालिसिस इज एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस. A large amount of process seek to explore the unknown terrain or the dimension of the possible future. What could happen, not necessary what will happen. And it is basically a exploratory process because it tell what could happen, as well as also what will happen. So ये आपको ये भी बताता है कि क्या हो सकता है. So that analysis is basically is tell what could be happen in the future. So ये business को environment analysis के बारे में बताता है कि क्या क्या चीजें circumstances आ सकते हैं. Now moving toward the next point, that is a holistic exercise. Holistic exercise, it basically environmental analysis is exercise in a sense that it comprises total view of environment rather than a piecemeal view. It is a holistic. You can say it is a total view of environment. It gives total and overall view of the environment, not a particular part of the environment. And the environmental analysis basically give a overview of the whole all all total of environment condition of the business. तो business की पूरी total condition के बारे में business environmental analysis बताता है, ना कि particular चीज के बारे में. तो एक overall external और internal environment के बारे में जितनी भी information होती है वो सब information environmental analysis के through मिल जाती है. तो इसीलिए business को environmental analysis कराना पड़ता है अपना, so that they can get to know and they get to know and identify all the external and internal factor of their business. So moving towards the next, that is a definition of environmental analysis. According to the William F. Blake, environmental scanning or the environmental analysis consists of identifying, analyzing environmental influences individually and collectively to determine their potential effect on the organization and consequent problem opportunities. They have to determine the potential and as well as the what could be the problems. So it help. It basically scanning is a process which is basically identifying and analyzing the environmental influences which affect the organization. Environmental analysis is described as a process which examine all the component, internal and external, that have influence on the performance of the organization. Internal component basically indicate the strength and weakness of the business, whereas the external component which tell about the opportunities and threat of the business. There are some important features about the environmental analysis. For the purpose of the environmental analysis, the environment of the organization is basically divided into three levels: general environment, operational environment, and internal environment. To improve the organization performance, the manager must aware of these three levels. ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है बिजनेस को. तो दैट्स व्हाई दे कैन मेक अ पॉलिसी एंड दे कैन फॉर्मुलेट अ पॉलिसी, दे कैन मेक अ strategic decision regarding their business through this environmental analysis process. तो इस environmental process के थ्रू वो अपने strategic decision making बना सकते हैं, अपनी business अपनी performance को they can improve their performance. तो basically ये थ्री तरह के environment है. अगर मैं आपको इन जनरल मैनर में कहूँ, जनरल environment basically macro environment होता है. As you know that हमने कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था. तो बिजनेस में जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, उसको जनरल एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसमें कि इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं. और हियर यू कैन सी द डायग्राम, कंपनी बीच सेंटर में है और उसका जो इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट, और उससे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है दैट इज मैक्रो. मैक्रो को हम जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं. नाउ मूविंग टू ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, जिसमें की फैक्टर्स आते हैं कस्टमर, क्रेडिट, सप्लायर, पब्लिक एंड फाइनेंशियल एंड इंटरमीडिएट. और नाउ इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट बेसिकली कंपनी के जो अंदर के होते हैं, लाइक mission, objective, and internal power relationship, human resource capabilities, marketing capabilities, research and development, and brand image. तो basically these environment analysis में हम तीन environment को analyze कर सकते हैं, और we can say in basically internal और external environment analyze करते हैं. internal में हमारा internal environment, external में हमारा general और operating आता है. operating को हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रो कहते हैं, और जनरल को हम मैक्रो environment कहते हैं. सो ये हमने जो पहले पढ़ चुका है उसी को लिख सकते हैं
सकते हैं, बट यहाँ सब में हल्की सी वोकैब चेंज हुई है, तो ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट। जनरल इन्वायरमेंट मैक्रो इन्वायरमेंट हुआ, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट माइक्रो हुआ, एंड इंटरनल इन्वायरमेंट बेसिकली इंटरनल जो कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।